The significance of the AFC Asian Cup in Indian football is immense. Besides being the continental championship, it is the World Cup for us. हाँ, लोग हंसने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ना हम लोग का ड्रीम ऑफ क्वालिफाइंग टू द फीफा वर्ल्ड कप अचीव होता है, द हाईएस्ट दैट वी कैन गेट इज द AFC एशियन कप. सो ये AFC एशियन कप का over the last 10-12 years there have been quite many qualifications. इस पे हम लोग को क्वालिफाई करना होता है. And Indian football has at least arrived that we are now consistently qualifying for the continental championship. तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यही है कि now it's the time to take the next step. And as the team prepares for the AFC Asian Cup Qatar 2023, हालांकि tournament, I reiterate each and every time, is being played in 2024 owing to the postponement of a year owing to the unfortunate COVID circumstances. On Bolda the Ball, your own storytelling platform, we felt it best to take a walk down memory lane and take a look at the qualification process and the build up and the preparation for the 2011 Asian Cup. Namaskar. My name is Nilanjan Datta. So 1984 के बाद इंडिया स्ट्रगल कर रहे थे एशियन कप क्वालिफिकेशन के लिए. We did not get near, or obviously we could not qualify for the AFC Asian Cup. The jinx was broken in 2008, 2008. और 2008 पे ये jinx broken हुआ for the 2011 Asian Cup, which was held in Qatar, Doha. So the qualification process in 2008 for the 2011 Asian Cup was not an home and away format. There were not groups which played against each other. Yeah, there was, but it was a centralized competition, or the AFC Challenge Cup, through which the champions of the AFC Challenge Cup could get a ticket, earn a ticket for the AFC Asian Cup. The story goes that as and when AFC had announced that the AFC Challenge Cup, they are looking for bidders to host the AFC Challenge Cup in 2008, the then national team coach, Mr. Bob Houghton, the great Mr. Bob Houghton, ran and rang Mr. Alberto Colasso Sarko, that we need to host this championship. I will win this for you and take India to the AFC Asian Cup. It was music to the years of the General Secretary and the late President at that time, Priyoda, Mr. Priyoranjan Dashmunshi. And India hosted, means offered to host the AFC Challenge Cup. We hosted it. Tournament हुआ हैदराबाद में. But हैदराबाद में tournament बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, but होनी को कौन टाल सकता है? As they say, nature को कौन रोक सकता है? कुछ नहीं हुआ, हुआ बारिश. और एक ही ग्राउंड गच्चीबोली स्टेडियम पे रेगुलर लगातार मैचेस के बाद और झमाझम बारिश each and every day without any respite होने के बाद the ground became literally unplayable. The final between India and Tajikistan was in a danger of being called off or maybe postponed to a neutral country later on. Obviously, India did not want to lose the advantage of hosting the final in a home country. And a decision was taken in consultation with the Asian Football Confederation by the All India Football Federation, the decision to shift the final match from Hyderabad to Delhi. अंबेडकर स्टेडियम, द होम ऑफ इंडियन फुटबॉल, जहां पे उस समय का एक साल पहले 2007 में इंडिया हैड वन द 2007 एशियन कप, जबकि एशिया 2007 नेहरू कप, माय अपोलॉजीज, जबकि नेहरू कप को फिर रिवाइव किया गया था. उसी ग्राउंड पे एआईएफएफ ने डिसीजन लिया कि हम लोग इस टूर्नामेंट का फाइनल को होस्ट करेंगे. बीच में सिर्फ 2 दिन, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, getting permissions, printing of tickets, selling of tickets, broadcasting, and most important, getting the ground ready. The ground luckily was sublimely ready
पूरा रेडी था एक इंटरनेशनल मैच के लिए, बट ऑल द रनिंग अराउंड एंड ऑल द अदर अरेंजमेंट्स नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ. एक छोटी सी नॉक to all those fans and people who believe about the organizational, who believe that the All India Football Federation is not a capable organization. Two instances of matches being shifted, high profile matches being shifted from one center to the other within 36 hours, and the matches being hosted successfully. The AFC Challenge Cup final 2008, the 2017 FIFA Under-17 World Cup semi-final, England versus Brazil. Maybe I save that for a different date. But एक मोहल्ला का मैच लोग करके देखे, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे एक मैच को आप इतना जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह से आप इतनी वीआईपी मूवमेंट करके, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स करके, टिकटिंग करके, ब्रॉडकास्टिंग को संभाल के आप कैसे सक्सेसफुली होस्ट कर सकते हैं. एनीवे, डिफरेंट स्टोरी. अंबेडकर स्टेडियम एक ऐसी जगह पे है जहां पे शाम को लोग वहां पे आके बातचीत करने के लिए अड्डा मारने आ जाता है, जैसे बांग्ला में कहते हैं एक अड्डा होता है. और दिल्ली लीग जब मैचेस होता था, जब मैं देखा, वहां पे लोग हमेशा बैठ के 2-3 हजार क्राउड मैचेस देखते रहते. तो कोई चांस ही नहीं है को अंबेडकर स्टेडियम में कोई मैच है और लोग ना आए. ए एंड बी, वो भी इंडिया खेले एक फाइनल, और सी द मैच बीइंग प्लेड अंडर द लाइट्स एज यूजुअल, सोल्ड आउट. और अंबेडकर स्टेडियम के बाहर ओल्ड टाइमर्स, हम लोग जैसा ओल्ड टाइमर्स को वी बिकम नॉस्टैल्जिक, गेट अ बिट नॉस्टैल्जिक. इट्स नॉट अ ट्रैफिक जैम. अंबेडकर स्टेडियम का जो लोकेशन है, इट्स इन द दिल्ली गेट. वहां पे आज के दिन पे भी शाम को, सुबह, हर टाइम पे कुछ ना कुछ ट्रैफिक जैम लगे रहते हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट जंक्शन डिस्पाइट द मेट्रो नाउ बीइंग देयर. और ये 2008 की बात है. ऑफिस आज खत्म हो गया, फुटबॉल क्राउड है, देयर वाज अ फुटबॉल जैम आउटसाइड अंबेडकर स्टेडियम. खचाखच भरा अंबेडकर स्टेडियम. बट अगेन एज दे से, होनी को कौन टाल सकता है. क्या हुआ? इट रेन्ड इवन इन दिल्ली. पूरी मैच को बारिश हुआ. एक भी आदमी वो 25,000 लोगों के बीच में वापस नहीं गया. और मैच शुरू भी हुआ स्टाइल से. इंडिया इस मैच से पहले विजन था, एम्बिशन था, बट दे वर स्ट्रगलिंग टू स्कोर. और इस मैच में पहले 3 शॉट अंदर चला गया गोल पे. सुनील छेत्री टैप इन किए, एक एनपी प्रदीप का रिबाउंड, बाईचुंग बुटी का एक सबलाइम लेफ्ट फुटर जो विंटेज बाईचुंग को याद दिला दिया, एंड सुनील शॉट फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स. 12 से 15 मिनट के अंदर वी वर 3-0 अप. बहुत सारे लोग अंदर आ नहीं पाए. आके स्कोरबोर्ड देख के हैरान हो गया, स्कोरबोर्ड खराब चल रहा है क्या. Lot many media friends of mine, I was a journalist at that time with NewsX, came and said, hey, problem hai kya? I mean, is the scoreboard giving us the wrong score? No, it isn't. We are 3-0 up. And we played all over. They did pull one back prior to the half-time interval. And obviously Sunil Chhetri completing his hat-trick, 4-1, India's march to the AFC Asian Cup. But even as everyone remembers the match for a certain Sunil Chhetri and a team effort, and one of the memories of that match will be staying Mehrajuddin Wadu's collection of the second ball. He destroyed everything, kind of, udhar, in the midfield. The match still I will be remembering. If any one of you have time, just rewind and you will be seeing कि second half पे स्पाइडरमैन होने से पहले सुपरमैन बन गया था सुब्रतो पॉल उस दिन पे. 4 से 5 ब्लाइंडर फ्रॉम हैंडशेकिंग डिस्टेंस सुब्रतो ने सेव किया था. द फेलियर ऑफ विच शुड हैव ब्रॉट ताजिकिस्तान बैक इनटू द मैच एंड 2011 एशियन ड्रीम, 2011 एशियन कप ड्रीम और द एशियन ड्रीम हम लोग का फुलफिल शायद नहीं होता. बट इसीलिए बड़े प्लेयर्स जन्म लेते, इसीलिए बड़े प्लेयर्स खेलते हैं. अंबेडकर स्टेडियम के उन सभी के सामने आवर मार्च स्टार्टेड एंड वी वर इन द AFC एशियन कप. 3 साल का प्रिपेरेटरी टाइम था, 2008 से 2011. एंड उस समय का कोच मिस्टर बॉब हाउटन ने यह फील किया कि नहीं, जो क्वालिटी ऑफ द लीग है, जो इंटेंसिटी एंड फिटनेस लेवल से एक इंटरनेशनल फुटबॉल एशियन टॉप लेवल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में चाहिए, वो इंडियन प्लेयर्स को, बॉब हाउटन का यह मानना था, उस लीग से नहीं मिल सकता था. तो इसीलिए
टीम को उसने AIFF के तरफ से रिक्वेस्ट करके पूरी 1-1.5 साल खुद के पास रखा। बाहर मोस्टली टीम ट्रेनिंग किए, प्रैक्टिस मैचेस कुछ खेले और रेगुलर से रेगुलर टीम का आहिस्ता आहिस्ता करके अपना फिटनेस लेवल्स लेके गया उस लेवल तक। किस लेवल तक? फॉर द कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, दैट वी वोंट फॉल शॉर्ट ऑफ मैच फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। और टीम सक्सीड भी किया वो फिटनेस अचीव करने के लिए। हालांकि उस जमाने पे द नेशनल टीम ज्यादा मैचेस नहीं खेलते थे। कोच साहब भी ये सोचते थे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस के साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द बॉयज कम हो सकता है, थोड़ी सी, इसीलिए गिने चुने ऑपोजिशन के साथ खेलते थे। कुछ क्लब टीम्स के साथ खेले, स्पेन में ट्रेनिंग किए, पोर्चुगल में ट्रेनिंग किया एंड दोहा 2011 टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन सामने आ गया, टीम दोहा पहुंच गया। दोहा पहुंचने से पहले जब दुबई में फाइनल लेग ऑफ द कैंप चल रहा था, वहां पे इंजरी शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेट बट पीपल स्टार्टेड पिकिंग अप इंजरीज। इतना तक आ गया था, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज पिकिंग अप ए वेरी heavy niggle one, means with every given day, कि Bob Houghton forcibly came to Subroto Paul and said, my son, I do not want you to practice anymore. I cannot afford to lose you at all. For the next 5, 6, 7 days before we go to Doha, you need not be practicing with the team. You can carry on with your own set of exercises, your own practice, because I do not want to get yourself involved into any 1v1 situations where unfortunately you may pick up an injury. वो इतनी cautious हो गए थे Bob Houghton. And the most important man whom we missed in the AFC Asian Cup was the one and only Kaptan Sahab Baichung Bhutia. I believe last match against Korea Republic he came in just means as a routine coming in, कि अच्छा he also played the Asian Cup for around 7, 8, 10 minutes, 8 minutes, 4 minutes. I exactly don't remember. Climax Lawrence captained the team. But the absence of Baichung Bhutia up front, the man who has been leading Indian football since the mid-90s to 2011, was synonymous with only one man. And for all the right reasons, our iconic Baichung Bhutia unfortunately couldn't play a part in the AFC Asian Cup. तो जो लोग कहते हैं ना कि टीम इंजरीज से उभर के आ रहे हैं, टीम को तो हम लोग मिस करेंगे, आप लोग को पता ही नहीं था कि बाइचुंग भूटिया जैसे प्लेयर 2011 एशियन कप पे हम लोग के साथ नहीं खेल पाया। ही वॉज देयर विद द स्क्वाड, ही कुडंट प्ले। हालांकि ये भी बात लोग भूल जाते हैं, दिस रिप्लेसमेंट अभिषेक यादव प्लेड द टूर्नामेंट ऑफ हिज लाइफ, फिजिकल, ओमनी प्रेजेंट, प्रेस करते रहे सुनील छेत्री के साथ 4-4-2। Bob Houghton always said, you eat, you sleep, you run, whatever you do, it's 4-4-2. Abhishek and Sunil complemented each other very well. Up front, it was a young, raw Sunil Chhetri at that time, who was just getting a foothold into international football. Abhishek, with his huge, big physique, used to hold the ball, allowing Sunil to come, allowing the other midfielders and the wingers to come up. हम लोग का ग्रुप भी वैसे ही ग्रुप मिला था, बिकॉज उस समय इंडियन फुटबॉल का उतना एक्सपोजर नहीं मिलता था। ऑस्ट्रेलिया, द गोल्डन जनरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, ऑफ द सॉकरर्स, ईच एंड एवरी वन वॉज प्लेइंग इन द EPL. कोरिया रिपब्लिक, जिसुन पार्क was the captain of Korea Republic, another World Cup team, 2 World Cup teams, and Bahrain was again a 3rd World Cup team, 2.5 World Cup team, because they were the Asian team the previous year for the continental playoff from Asia, for which they couldn't make the World Cup, unfortunately, but that was the quality which we faced. Sunil scored. Subroto Paul announced he was the Spider-Man. The only instance, still I always reiterate this, the only instance हम लोग का भारतीय फुटबॉल में कि एक इंडियन फुटबॉलर को इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनिकली कोई टाइटल दिया था स्पाइडरमैन, दैट वाज द AFC Asian Cup 2011. द स्ट्रेंथ ऑफ द स्क्वाड,
despite all the guidance which they had, the training which they had, these boys of the class of 2011, और नाम लू एक एक करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुब्रतो पॉल, सुभाषिश अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर, आपकी गुरप्रीत संधू बच्चा था, अरिंदम, सुरकुमार सिंह, दीपक मंडल, मोहेश गावली, समीर नायक, गौरवांगी सिंह, अनवर अली, क्लाइमैक्स लॉरेंस, स्टीफन डायस, एनपी प्रदीप, रेनेडी सिंह, सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, सुशील सिंह, गोविंद सिंह, अभिषेक यादव, एक्सेप्शनली टैलेंटेड स्क्वाड. सो ये 2011 हम लोगों को पहली बार आफ्टर 1984 showed that we can reach at that level. We can rub shoulders with Australia or a Korea Republic or top Asian teams. It showed us and made us believe, okay, अगले बार से हम लोग को रेगुलर वहां पे जाना है. Unfortunately, we couldn't in 2015. 2019 we did. 2023 we are 2023, for which it's playing in 2024. We are already there. But the self-belief of Indian football was injected into the ecosystem of Indian football by that class of 2011. हालांकि results हम लोग का उस टाइम का अच्छा नहीं गया. Please put your hands together always to just applaud them, their sacrifices and they being path bearers, because जब भी हम लोग एशियन कप बोलेंगे, बातचीत करेंगे of the modern era, the names which would come would be of that class of 2011. A big salute to all of them. On your own storytelling platform, we will be continuing about all other batches who have made qualification into the Asian Cup. Stay well, stay safe. आज्ञा दीजिए. बोलते रहिएगा बोल दादा बोल.